We are entering a space of risk. या बिकॉज ऊपर की जगह अभी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए रखी है. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दिस इज अ बिगर स्कैंडल. 10 crore stock people who invest in stock markets, sir, their money and their future is involved. That's at stake. And they're all going to get hurt. कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अदानी जी को और लगभग क्लीन चिट ही दे दी. Make the entire communication transparent. एक बार शांत रहेगा. सृष्टि चलती रहती है. मतलब कुछ वैसे पूछ रहा हूँ मैं, 2 दिन छुट्टी. कुछ कह नहीं सकते. पॉलिटिक्स में कभी छुट्टी नहीं होती. हाँ बात सही है. और सही. मेरा नाम पवन खेड़ा है और मैं चेयरमैन हूँ मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का. अब साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस भी करता हूँ क्योंकि अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता नहीं इस देश में. पिछले 10 साल से तो मुझे याद भी नहीं कि किसी ने कभी कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया हो पिछले 10 साल में. माधवी बुच एक प्रोफेशनल करियर वुमन है. पहले आईसीआईसीआई में थी, मैक्स में थी, बड़ा नाम है. फिर उनको ये सरकार 2017 में सेबी की होल टाइम मेंबर की हैसियत से लाई और उसके बाद 2022 में इनको चेयरपर्सन बनाया. सेबी में ये प्राइवेट सेक्टर की पहली चेयरपर्सन. उससे पहले हमेशा सरकार के ही लोग आते थे. हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के बाद हमने देखा कि कैसे ये गौतम अदानी की मदद करती हुई पाई गई तो इंटरेस्ट हुआ. फिर इसमें कुछ साथी हैं, कुछ अननोन सोर्सेज हैं जिनके हमने कोड नेम्स भी रखे हुए हैं. उनमें से एक है जिनका कोड नेम मैवरिक है. तो वो मैवरिक इसलिए कहलाया जाता है कि वो जितना उसके पास होता है वो उड़ेल देता है. Directly affected by the stock market, and if the stock market's regulator, which is SEBI, is completely compromised in the hands of 1 or 2 or 3 big corporates, then obviously their money is not safe. So she, as a regulator, will only safeguard the interests of these 2-3 corporates and not the overall market. Remember the Harshad Mehta scam, 1992. We've done ICICI, we've done Wockhardt, we've done Agora, we've done foreign assets, we've done listed securities. Now what we are left with is whole time member. The scams relating to him, there are 2 at least or maybe more, but 2 we have, right? So Chinese, we've covered Chinese in the listed securities. And What mischief are you guys up to? how are you? Hello. What's going on? Sir, this is my research team. Hi guys. So we are taking the next step on the Madhvi Buch episode. We've done 4 or 5 episodes, as you know. So now we have some more findings on SEBI. Now that the elections are over, we're thinking of the next press conference on Madhvi Buch and the SEBI saga, as we call it. There are thousands of people who would be really interested in this stuff. There are thousands of people who, seeing this stuff, would say, you really want to help, fight corruption in India. They're young people like you. So can we show them actually what's going on? 10 crore stock people who invest in stock markets, sir, their money and their future is involved. That's at stake. And they're all going to get hurt. Now we tried to find out why is Madhvi helping Adani. So if she is so compromised, like all these papers that you see here are different cases of her which show that how she is so thoroughly compromised. कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अदानी जी पर और लगभग क्लीन चिट ही दे दी. Now what we've got to do is we've got to show the people more granularity about that idea कि भैया ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये सब बिना मतलब प्रधानमंत्री जी के
investigative journalism. But You're doing the media's job. I need to have a word with you also because continuing with what Thank you. said. Thank you. Sir, unfortunately, we have been raising explosive issues one after the other, but nothing seems to click, nothing gets covered the way it should get covered. I mean, a silly little BJP worker says something and there are debates on it. And we raise such important issues, no debates, no traction, just one perfunctory coverage and that's it. Unless Rahul Gandhi takes up an issue, the issue doesn't click with debates in the evening, with coverage on television, with traffic on social media. But then I can't, हम you लोग know, I can't मर be the जाते हैं only- सर मेहनत कर but करके. I can't be the only guy taking up issues. Well, I'm not saying, but So how does one bypass? sir, How does one- I don't know. Why do you think that's the case? Why do you think? Because sir, there Because is you're pressure. You're giving good information, right? That information is valuable. So people should say, that's interesting. Sir, Why? they can afford to ignore us because they are asked by the state to ignore us. They can't afford to ignore Rahul Gandhi. If we're trying to make something transparent, make the entire communication transparent. That's a Think very about it like scary idea, but a great idea. I mean, Think one about it can- like yeah, that. yeah. You know? I mean, it's scary. Believe me. Scary, obviously, because it's tricky. You don't know what Yeah. you might say, what you might not say. But I think we are entering a world where this is now limited, right? Yeah, and so we have because- to do it in such a way where this limitation is fixed. And let's start small. Let's start small. I have no problem in starting. हमारी चिंता राजनीतिक पार्टी की हैसियत से एक चिंता है, क्योंकि हम इस मिडिल क्लास की जो चिंताएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए हम आपके सामने बार बार इतनी रिसर्च करके आते हैं। हमें चिंता है कि इस देश की जो छवि है, इस देश के मार्केट की जो साख है, उसकी चिंता देश का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा। हमें इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। I am here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I am not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. Right? And I will continue to ask the question. माधवी जी के लिए एक अलग पॉलिसी है, बाकी कर्मचारियों के लिए अलग पॉलिसी है ईसॉप की, पता है? ये डिमांड तुम नहीं तो माधवी जी जवाब दें। हमने कल भी उनको आग्रह किया था कि आप खुद जवाब दीजिए, नहीं तो हम हर दूसरे दिन आएंगे, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नए खुलासे करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। एज आई सेड, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग।